Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I am taking your uh, 24th lecture of Manufacturing Technology 2. So, in the previous series of the lecture, we try to discuss about the various two processes of the uh, plastic part manufacturing process, which is the compression molding process, right? Which is and the transfer molding process, which is highly used for the various kind of the plastic part manufacturing process. In today's lecture, we try to discuss the another new process. In this lecture, we try to cover the another new three process uh, in these lectures, and let's start the discussions with the first process, which is the injection molding process. Now, what is happening in the injection molding process? So the definitions of injection molding is a manufacturing process for producing a parts from both the thermoplastics and thermosetting plastics or other materials. यानी इंजेक्शन मोल्डिंग जो है वहाँ पे जो लिमिटेशंस था, जैसे कंप्रेशन मोल्डिंग के अंदर, ट्रांसफर मोल्डिंग्स के अंदर, कि आप कोई एक टाइप के प्लास्टिक से आप जो है वो पार्ट बना सकते हैं. ये जो प्रोसेस है इंजेक्शन मोल्डिंग, ये थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग दोनों जो है और अदर मटेरियल्स के लिए भी हम लोग इंजेक्शन मोल्डिंग से जो है वो पार्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं. द मोल्ड डिजाइनिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन द इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस वेयर द मोल्ड इज होलो, राइट. वहाँ पे जो मोल्ड होता है वो आपका होलो होता है. Outbook used when the components are to be made from the plastics or the rubber or the glass, etc. Usually the mold is made from the metal such as a steel or aluminum. यानी इंजेक्शन मोल्डिंग से नॉर्मली प्लास्टिक, रबर, ग्लास से जो है वो प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, पर उसके लिए जो मोल्ड यूज़ होता है वो बेसिकली जो है वो मेटल विच इज़ दिस जो है जो स्टील या फिर एल्यूमिनियम से बना होता है. The main functions of the mold, which is give the desired shape to be part, right. जो mold है वो एक desired shape देता है part को. Then it is cool and cure the material को cool करने के लिए, cure करने के लिए use होता है. eject the part properly, हम लोग properly part को eject कर ले, इसके लिए भी use होता है. Then to disturb the melt, right, melt को disturb करने के लिए भी use हो सकता है. To withdraw the clamping forces and the ejection pressures, right, to withstand the clamping forcing जो लगते हैं और ejection pressures जो लगता है, उससे withdraw करने के लिए भी mold जो है वो काफ़ी हद तक यहाँ use होता है. The types of the plastic which is to be used here, the both type of the plastic which is used, which is the thermoplastics and the thermosetting plastic. Thermoplastics are the plastic that do not undergoes a chemical changes, जिसके अंदर किसी भी टाइप का केमिकल चेंजेस होता नहीं है. एंड इन दर कंपोजिशंस व्हेन विच इज़ हीटेड और कैन बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन. आप उसको हीट करोगे या फिर उसको बार बार मोल्ड करोगे तब भी उसके अंदर कोई केमिकल चेंजेस जो है वो ऑब्जर्व नहीं होते. वेयर द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कैन मेल्ट एंड टेक द शेप वंस आफ्टर दे हैव अ सॉलिडिफाइड, दे स्टे सॉलिड, राइट. उसको आप हीट करके मेल्ट करके उसको बना सकते हो, किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हो, पर जैसे ही वो सॉलिड हो गया इन द थर्मोसेटिंग प्रोसेस ए केमिकल रिएक्शन इज अकर दैट इज द इरिवर्सिबल. वहाँ पे जो है वो केमिकल रिएक्शंस होता है. नाउ in your screen you can see the process figure of the injection molding process. So the what the basically is happens in the injection molding process, आपके पास hopper के अंदर the raw material of that plastic product is that when from the raw plastic materials which is inserted into the chambers, at there it is heated, and that heated plastic which is become as a softer due to the process of the heaters, and when we are applying the some kind of the pressures with the hydraulic fluids or the ram, it is compressed towards the mold, and the mold has a certain kind of the opening which is required in the shape, right. जो हमें शेप चाहिए उस टाइप का मोल्ड के अंदर ओपनिंग होता है. अब जैसे हम लोग when we are applying the certain kind of the force, the
soft plastic material which is converted into that shapes. So the main component in this process, which is the hopper, the thermoplastic material is supplied in the form of the small pallets. The gravity which is feds into the barrels and the screw assembly. Now next, which is the barrel, जो नीचे वाला container था ना वो. This is the chamber in which the reciprocating screw is located, and the barrel is heated by the electric heater bands. Third, which is the nozzle which is formed is sealed connections between a barrel and sprue brushing of the mold. A temperature of the nozzle is set near the plastic melt temperature. Then the reciprocating screw is compresses and melt the plastic materials and also moves the materials towards the die. And there are the main three zones, which is the feeding zone, transition zone, and maturing zones. So what is happening in the process of the injection molding process? A powder plastic is fed from the hopper into the injection molding machines. The rotating screw inside the barrel which is carries the plastic along the barrels to the mold. The heater surrounds the barrel is melt the plastics as it is travels along the barrel. The screw is forced back as the metal plastics is collect at the end of the barrel. Once the plastic has collected, a hydraulic ram pushes the screw forward, injecting the plastic through a sprue into the mold cavity. The mold is warmed before injecting. The plastic is injected quickly to prevent it from the hardening before the mold is to be full. The pressure is maintained for a short period of the time and prevent the material which is creeping back during the seating, which is the hardening kind of the process. This prevents the shrinkage and the hollow, therefore giving a better quality product. इससे जो है वो एक तरीके से बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो हमें मिलता है. द मोल्डिंग इज लेफ्ट टू कूल. इसके बाद आप मोल्ड को जो है वो ठंडा कर देने के लिए छोड़ देना है. बिफोर रिमूविंग इजेक्टेड्स फ्रॉम द मोल्ड्स एंड द मोल्ड इज टेक प्लेस ऑन द शेप ऑफ द मोल्ड केविटी. इसके बाद जो आपको प्लास्टिक का आपका शेप बन जाएगा, जो मोल्ड केविटी का शेप है उस टाइप का आपका शेप जो है वहाँ पे इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस से आपको मिल जाएगा. Now, what are the advantages of this injection molding process? We can achieve the high rate of the production, can process a wide range of the materials, scrap materials can be recycled and reused, a smooth surface can be achieved, full automation is possible with the injection molding process, and which is the more uniform for the melting materials. Now, what are the disadvantages of this process? There is a high initial investment is required in injection molding equipments. There is a high startup and running cost which is required. The contaminations of the raw material is affect the quality of the final product. The contaminations of raw material is affect, अगर आपके raw material के अंदर कोई contaminations हो रहा है, right? Then which is affect the final product of your plastics. And the problem with required heating or cooling of the plastic which is happen. अगर आपका जो हीटर है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, राइट, जो आप रो मटेरियल प्लास्टिक का होपर में से जो है वो बैरल में इंसर्ट कर रहे हो और जैसे ही बैरल में पहुंच जाएगा तो वो एकदम जो प्रॉपर हीटिंग होना चाहिए, जैसे अनइवन हीटिंग होगा तो फिर जो है वो यहाँ पे मोल्ड के अंदर इंसर्ट के दौरान जो है वहाँ पे आपका जो है वो आपको प्रोसेस के दौरान जो है डिफ़िकल्टीज आ सकती है. Now, what are the advantages or what are the applications of this process? In the applications, the automotive components, we can manufacturing the automotive components, cable assemblies, computer electronics components, medicals and dental products are there, toys and hobbies are there. The beverages we can also manufacturing, the beverage plates we can also manufacturing from the injection molding. And the laboratories equipments are also manufactured with the help of the injection molding process. Now, the second
process of our today's lecture, which is the extrusion process. अब जो second process है आज के lecture च, which is the extrusion process. Extrusion molding process के अंदर क्या होता है? The extrusion molding is the process to make the part of a continuous length and uniform cross sections. Extrusion molding जैसे एक आपके पास पानी की पाइप हो गई, ड्रेनेज की पाइप हो गई, जैसे आपको वैसे पार्ट्स बनाने हैं जिसकी लेंथ बहुत बड़ी है और यूनिफॉर्म आपको क्रॉस सेक्शंस चाहिए, उसके लिए जो है वो एक्सट्रूजन मोल्डिंग जो है वो बहुत ही यूजफुल प्रोसेस है. ए कैरेक्टरिस्टिक्स दैट्स ऑफ्टन sorry differentiates extruded from the injected molded plastic is the viscosity of the plastics at the normal processing temperature. The extruded plastics is often have a higher melt viscosity. इसके अंदर जो है वो melt viscosity बहुत ज़्यादा होती है, which allows the extruded to retain the shape which is imparted to it by the die while the extrudate is in the quenching stage. Extrusion molding, the machine is used to extrude materials, is very similar to an injection molding. ये जो है वो injection molding से काफ़ी similar है, right? A motor is turn the screw which feed the granule of the plastic through the heaters. The granules melt into the liquids which is forced to the die, forming a long tube like the pipes. The shape of the die determine the shape of the tube. वो तो उसके जैसा ही है, जैसा शेप आपके डाई के अंदर है उस तरीके का शेप जो है वो आपके प्रोडक्ट का जो है वो मिलेगा. द एक्सट्रूजन इज देन ऑफ्टन कूल्ड एंड फॉर्म अ सॉलिड शेप. जैसे वो ठंडा होगा तो वो सॉलिड शेप में कन्वर्ट हो जाएगा. द ट्यूब इज मे बी प्रिंटेड अपॉन द कट एट द अनइक्वल इंटरवल. आप उसको कहीं से भी काट सकते हैं. द पीसेस इज मे बी रोल्ड फॉर द स्टोरेज और द पैकेज टुगेदर. द शेप दैट can result from the extrusion, which is the T section, U section, square section, L section, or the circular sections we can manufacture with the help of the extrusion molding process. Here you can observe the process figure of the extrusion molding is that when we insert the raw plastic pellets into the hoppers, and due to that which is inserted into some kind of the one kind of the containers which has a certain kind of the screw which is rotating under the barrels, and we externally apply the heat, some kind of the heat, and due to that heat that extruded project, when the ram which is inserted when the ram which is inserted towards the mold directions, and we can achieve the extruded parts towards the end of the one product. Once it is cooled, it is become as a solids, and it is passing from the pull rollers where we can extrude it, or we can pull it, and at the required length we cut, and we get the exact size of the plastic product. So these are the figure of that extrusion molding process, right? ये फिगर भी काफ़ी सिंपल फिगर है. प्रोसेस अगर मैं बात करूँ तो प्रोसेस वाइज जो है वो ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है एक्सट्रूजन मोल्डिंग और इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस के अंदर. एक्सट्रूजन मोल्डिंग प्रोसेस विच हैज़ अ स्क्रू एक्सट्रूडर्स वर्किंग ऑन दी सम प्रिंसिपल एज द ऑर्डिनरी डोमेस्टिक mincing machines are used. A plastic extruder is consist essentially of a barrel or a cylinder which is fitted with the screw. The die is fitted into the extruder head at the front of the machines. The feed hole is at the back end. The screw extruder is usually have a 3 or 4 heat zone along the length of the barrel, each of which can separately controls at the predetermined temperature. The heating is affected by the means of the electric resistance heater
on a barrels and the nozzle, or by passing steam or a hot oil through the pot built into the machines. Electric heating is most of useful. The different materials which is required, different temperature for setting at the heat zone, and for a given material the temperature which is setting vary from one type of the machines into the another type of. The following list which is gives an indications of the temperatures range from feed hopper to a die which is employed with the important thermoplastic materials. So these are the product which is manufactured, different kind of the sections which is manufactured with the help of the extrusion molding process. Now the next process of our today's lecture, which is the blow molding process. Now let's discuss the blow molding process. Now what is happening in the blow molding process? So what is blow molding? A blow molding or the blow forming is a manufacturing process by which a hollow plastic part which is to be formed. यानी ये एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिससे जो है हम लोग होलो प्लास्टिक पार्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं. अब प्रोसेस मटेरियल्स कौन से हैं? द ब्लो मोल्डेड पार्ट्स विच इज कैन बी फॉर्म्ड from a variety of the thermoplastic materials such as a low density polyethylene, which is the LDPE, then the high density polyethylene, which is the HDPE, then the polyethylene theraplates, which is the PTE, then the polypropylene PP, then the polyvinyl chloride, which is the PVC. यानी इस तरीके के जो प्लास्टिक्स है उसको यूज़ करके हम लोग थर्मोप्लास्टिक को यूज़ करके जो ब्लो मोल्डेड प्रोडक्ट जो है वो हम लोग बना सकते हैं. तो देयर इज अ 3 टाइप्स ऑफ द ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस, विच इज द एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग, इंजेक्शंस ब्लो मोल्डिंग एंड स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग. So the basic process in the blow molding process is that particles of the hot plastic resins in a tube like a shape is formed. This is called as a preform. यहाँ पे जो है वो एक preform और a parison of the hot plastic resins in a tube like the shapes is formed. This is called as a preform. A pressurized gas, usually air, is used to expand the hot preform and press it against the cavity. The pressure is maintained until the plastic is to be cooled. Now, what are the process details? The process which is begins with the melting down the polymers into the parisons. The parison is then clamped into the mold and the air is to be pumped. राइट यानी क्या है कि एक आपको हॉट प्लास्टिक जो है वो आपको एक प्लास्टिक जो गर्म किया हुआ प्लास्टिक जो है वो पैरिजोन के अंदर डाल देना है. राइट अब पैरिजोन जो है वो एक तरीके का मोल्ड है जो क्लोज हो जाएगा और एक तरह से एक ऊपर की साइड से या फिर एक साइड के कॉर्नर से जो है वो एक जगह से जो है वहाँ पे एक छोटा सा हॉल रखा होगा जिससे आप जैसे एयर को पंप करोगे तो आपके पास जो अंदर प्लास्टिक जो आपको आपने जो एक हीटेड प्लास्टिक डाला हुआ है वो हीटेड प्लास्टिक क्या करेगा कि जो मोल्ड का इंटरनल शेप है वो शेप को वो शेप में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा. जैसे ही मोल्ड आप जैसे वो ठंडा हो जाएगा आप ओपन कर दोगे, जैसे ही उसको हॉल को आप वहाँ से रिमूव कर देगा तो आपको जैसे एक पानी की बॉटल है राइट जैसे प्लास्टिक मैंने एक मोल्ड के अंदर मेरे पास ऐसा मोल्ड है जैसा मेरे पास मुझे प्लास्टिक की बॉटल बनानी है राइट. तो जैसे मैंने प्लास्टिक मोल्ड के अंदर डाल दिया अब मैं ऊपर से एयर का प्रेशर अप्लाई करूँगा तो जैसे मोल्ड का शेप है वो प्लास्टिक जो है हीटेड प्लास्टिक वो उस शेप में मोल्ड के शेप में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा. एंड द गैस प्रेशर विच इज़ इनसाइड द पुशेज इनटू द ट्यूबुलर बाउंड्रीज ऑफ द पैरिजन अंटिल इट इज टेक द शेप ऑफ द मोल्ड. हम लोग वहाँ तक उसको प्रेशर अप्लाई करेंगे, हॉट प्रेशर अप्लाई करेंगे जब तक वो शेप जो है पूरा प्लास्टिक अचीव नहीं कर लेता. वंस द पॉलीमर इज टू बी कूल्ड द मोल्ड इज टू बी ओपन्स एंड द पार्ट विच इज़ टू बी इजेक्टेड. अब पार्ट वहाँ से इजेक्ट कर दिया जाएगा. तो ये जो है वो यहाँ पे एक बॉटल का एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ पे फिगर के अंदर देख लीजिए कि
जो पैरिजन एक्सट्रूजन्स है, तो मैंने क्या किया कि प्लास्टिक जो है वो हीटेड प्लास्टिक, जो ब्लू कलर वाला प्लास्टिक है, वो मोल्ड के अंदर मैंने डाल दिया। जैसे ही मोल्ड के अंदर मैंने डाल दिया तो अब मैं सेकंड के अंदर क्या करूँ, तो ब्लो मोल्डिंग के अंदर जो है वो पूरे प्लास्टिक जैसे जैसे ही मैं जो है वो एक एयर का प्रेशर जो है वो अप्लाई करूँगा, तो वो जो प्लास्टिक जो मैंने डाला हुआ था वो प्लास्टिक क्या करेगा कि जो इंटरनल शेप है राइट मोल्ड का, वहाँ पे जो है वो कन्वर्ट करने की, वहाँ पे जो है वो फैलने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही एक एक्सटेंट लेवल पे जाएगा तो एक टाइम के बाद जो है वो प्रेशर के बाद जो है वो पूरा मोल्ड के अंदर प्लास्टिक जो है फील हो जाएगा राइट। जैसे वो फील हो जाएगा, अब जो है उसके बाद जो है जैसे वो ठंडा हो जाएगा तो हम लोग उसको मोल्ड से बाहर निकाल के उसको इजेक्ट करेंगे। अब आपके पास यहाँ पे पानी की बोतल जो है वो पार्ट रेडी है। नाउ एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस। इन extrusion blow molding process, a plastic is melted and extruded into the hollow tube, right? ये आपको हमने देखा है। This parison is then captured by closing it into a cooled metal molds. Air is then blow, जैसे blow यानी जैसे हम लोग जो फुग्गा नहीं फुलाते हैं उसको blow the balloons, उसी तरीके से हमें करना है right, into the parisons, inflating it into the shape of the hollow containers or the parts. Now the second, which is the ejections blow molding, which is in ejection stage, a molten polymer is injected into the heated preforms mold. The preform, which is consist of a fully formed neck with a thick tube of the polymer which is attached. Then the blowing अगर स्टेज की मैं बात करूँ तो the preform is passed to the hollow and cooled blow molds. The compressed air is blown into the preforms, inflating it and forcing it against the mold. Now the third, which is the ejections. The blow formed polymer is allowed cool, then removed from the mold and cleaning and testing is to be carried out. Now the last, which is the stretch blow molding. अब यहाँ पे क्या करना है कि खींचना है। The preform is first made with the injections molding. In SBM, which is the stretch blow molding process, the preform are heated using the IR heaters, right, infrared heaters, and then the blown using the high pressures air into the various shape inside the metal mold. तो इस तरीके से वो बॉटल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। Now what are the advantages of the blow molding process? It is a well suited for a low or high production rate. The mold costs are comparatively low due to the lower pressures, a quick product revisions for increased flexibilities. The tooling is less expensive than the other molding process. The price per part is less than in the rotational molding. So these are the advantages of the blow molding process. Now what are the disadvantages of the blow molding process? The product are not the biodegradable most times, यानी आप बार बार इस प्लास्टिक को यूज़ करके जो है उससे बना नहीं सकते। So these are the big advantages, disadvantages. Then the process and material, which is the limitations. The extrusion molding has a longer cooling time than the ejections molding. Cooling time जो है वो ज़्यादा लगता है. It is not possible to mold the hole. यानी आपको अगर कोई होल जो है वो मोल्ड करना है तो वो पॉसिबल नहीं है, एक्सेप्ट आफ्टर द मोल्डिंग. वो जो मोल्डिंग है वो हो जाने के बाद जो है वो आप कर सकते हो. साथ में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो एक ही गैप है वहाँ से हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं, ब्लो द एयर करने वाले हैं, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है. नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस? हम लोग वी कैन मैन्युफैक्चरिंग द मिल्क बॉटल्स, फार्मास्यूटिकल बॉटल्स, एंटी फ्रीज बॉटल्स, then the garbage cans, drums, fuel tanks and the ice chests in the coolers जो है वो हम लोग ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस से जो है वो बना सकते हैं. So this is all about the three different molding processes. The first, which is the injections molding, right? We will discuss in this lecture. The second, which is the extrusions molding, and the third, which is the blow molding process, which is discussed in this lecture. If you have a certain kind of any kind of the questions, you can ask me in the comment sections. After watching this video, you have to write your enrollment number in the comment sections. After that, after this lecture, only
two topics is remains from your syllabus, which will taken the one lectures, and we will cover these two topics, and your manufacturing technology syllabus is to be completed in 2 days half. So thank you so much for watching this video. Thank you.